Welcome dear students. I am your teacher अभिनव तिवारी. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्ट और सॉल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन, स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट acid are those chemical substances that dissociate in aqueous solution and give us hydrogen ion or hydronium ion. Similarly, bases are those chemical substances which dissociate in aqueous solution and give us hydroxide ion, that is OH negative ion. This is the hydroxide ion. But now we are going to understand that what will happen when this hydrogen ion and hydroxide ion combine. In the previous chapter, chapter number 1, chemical reaction में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में. तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को नलिफाई कर देते हैं. यहाँ पर हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है एंड हाउ कैन इट बी फॉर्म. सॉल्ट्स को हम किस तरह बना सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड. सॉल्ट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड. ये एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड होता है दैट कैन बी फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. Hydrochloric acid and sodium hydroxide. This is hydrochloric acid, it is a base, and it is sodium hydroxide, that is NaOH, it is base. So what happens when they both react with each other? So dear students, this NaNCl combine with each other and form NaCl. And from acidic part we have hydrogen ion, and from basic part we have hydroxide ion, that is OH negative ion. Both are oppositely charged particles, and we know that when we have opposite charged particles they don't attract each other. So H positive और OH negative आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हमें वाटर केमिकल रिएक्शन में प्रोवाइड करते हैं. This reaction is an example of neutralization reaction. ये reaction एक neutralization reaction का example है, because इस reaction में acid और base आपस में combine करके एक दूसरे के acidic और basic effect को nullify कर रहे हैं, neutralize कर रहे हैं. Number 2, इस chemical reaction में, जिसको हम neutralization reaction कहते हैं, इस chemical reaction में हमें product मिलता है NaCl and H2O. This NaCl is sodium chloride. Sodium chloride, and it is our salt. इस तरीके से हम salt को फॉर्म कर सकते हैं with the help of neutralization reaction. In our daily life हम different तरह के salts को पढ़ते हैं और आगे हम family of salts के बारे में डिस्कशन करेंगे. Students, now we will study family of salts. The question is, how can we decide that the given salt belongs to the same family or different family? आपको एक सॉल्ट दिया गया है, वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है या किसी डिफरेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट को बिलोंग करता है. सो द आंसर इज द सॉल्ट्स लाइक द सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट. द सॉल्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फैमिलीज और सेम फैमिलीज डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर that they have same cation or anion or different cation or anion. Here you can understand this concept like the family of salt, the common ion present in the salt, and examples of salt. Like students, we have first sodium family. The sodium family have a common salt, that is sodium ion, Na positive cation. And the examples of sodium family are sodium chloride, NaCl. Common is sodium. Second is sodium sulfate. Chemical formula of sodium sulfate is Na2SO4. Common is
Na. Again, third example of sodium family is sodium nitrate, that is NaNO3. आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन सोडियम आयन इज कॉमन। तो इस तरह सोडियम सॉल्ट या सोडियम फैमिली में सोडियम आयन कॉमन है, और यहाँ पर एग्जांपल्स आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड फैमिली, दैट इज पोटेशियम फैमिली। पोटेशियम फैमिली है पोटेशियम सॉल्ट ये पॉजिटिव इज कॉमन। एग्जांपल्स ऑफ पोटेशियम फैमिली आर पोटेशियम क्लोराइड, that is KCl. Potassium is common. Second is potassium sulfate, K2SO4. Potassium is common. Third is potassium nitrate, KNO3. Potassium is common. So through these examples हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम आयन कॉमन है। So that is why all these three examples belongs to potassium family. और सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट में Na पॉजिटिव आयन कॉमन है, सोडियम आयन कॉमन है, that is why they belongs to sodium family. Another family we have chloride family or chloride salt, in which we have chloride ion, that is Cl negative ion. The common examples of chloride family are sodium chloride, so it has NaCl, Cl is common. And the next example is potassium chloride, potassium chloride, that is KCl. Again, chlorine is common in all these two examples, so they belongs to chloride salts. Salt. A salt of a strong acid or a strong base will be neutral in nature, then it will have a pH 7 approx. A salt of weak acid and a strong base will be a basic in nature and the pH will be greater than 7. A salt of a strong base and a strong acid and a weak base will be acidic in nature and the pH will be less than 7. So it will depend upon which part is strong. The pH will be governed as according to this. Now we have sodium hydroxide. The common name of sodium hydroxide is caustic soda and the chemical formula is NaOH. How do we prepare sodium hydroxide? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, that is brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because of the product are formed chlor for chlorine and alkaline for sodium hydroxide and alkaline. Then we have sodium chloride, NaCl react with H2O and it forms NaOH, chlorine gas and hydrogen gas. Chlorine gas is given off at an anode and the hydrogen gas is collected at cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. Then we have bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on the dry slaked lime. The common formula of bleaching powder is CaOCl2. Bleaching powder is represented as CaOCl2, that is calcium oxychloride. So the actual composition is quite complex. How do we prepare it? Chlorine gas is passed over the calcium hydroxide solution. Then CaOCl2, that is calcium oxychloride or bleaching powder, is formed along with water. Bleaching powder is used for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in the paper factories, and for bleaching washed clothes in the laundry. Bleaching powder is also used as an oxidizing agent in many chemical industries. Bleaching powder is used for disinfecting drinking water to make it free of germs. Now we have baking soda.
The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate formula is NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. So how do we prepare sodium hydrogen carbonate or baking soda? Let's understand this. Sodium chloride react with ammonia, react with water and carbon dioxide. They all react with each other and form NaCO3, that is sodium hydrogen carbonate, and NH4Cl, that is ammonium chloride, is formed as the byproduct. Where do we use sodium hydrogen carbonate? It is also used in soda acid or fire extinguisher. Sodium hydrogen carbonate is also as an ingredient in antacid. Dear students, if you have any query, you can comment in the comment box. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.